Hello and welcome to Goa 365's News Now. I'm Shivani Sangelkar and these are the headlines. In a shocking incident, a severed hand was found near a building in Ambaji Fathoda. Police are investigating as neighborhood aghast that such incidents are happening in Goa. As fishing ban due at the end of the month, boat owners who are all set to restart their business operating from Kudbona jetty want government to sort out problems for the formation of sandbars at the mouth of the river. After lots of rain, Goa to get a break for next few days, says IMD downgrades warning of yellow alert. And now for the news in detail. In a shocking incident, a severed hand was found near a building in Ambaji Fathoda. Is it a heinous murder? Who does the hand belong to? These are the questions that police now have to decode and find the answers to. For now, the hand has been sent for forensic and police have begun the investigation. आज आम्ही आसा ते अंबाजी फातोड्डा हांगा एक बिल्डिंगेच्या पार्किंगात एक अननोन पर्सनाचो जो हात आसा वो तुटलेलो हात आसा तो आज मेळे कडेन आसा. हे मेटर एक थंयच्या लोकांनी रोखडेच बिल्डिंगेच्या लोकांनी फातोड्डा पुलिसे फोन केलो आनी इन्फॉर्मेशन दिलें. त्या बरोबर फातोड्डा पुलीस जो PI आसा त्याचो स्टाफ जे आसा ते त्या स्पॉटार गेले आनी स्पॉटार वयतरेक तेणी पळयलें की एक हात जो आसा वो थंय पडून आसा. आतां हो हात थंय कसो पडलो हो अजुनूय कोणाक कांय खबर ना. फातोड्डा पुलिसांनी रोखडेच स्क्वॉड डॉग आसा हेंकाय हाडले. जे स्क्वॉड डॉग आसा ते आपल्याले वाटेर गेले पूण तांकां जाय तसो क्ल्यू मेळना. हे आतां पळोवचें पडटलें की हो हात कोणा म्हणटा तो. हो कट जाल्लो हात आतां एक जावपाक शकता जे आमकां इन्फॉर्मेशन एक मेळ्ळा आनी आमी काल तेकोतात हो एक कोण तरी बॅगर्स जो आसा हो मेलो आसतलो आनी तेजो तो खंय तरी पडोन कुसला आनी तेजो हात हे सुन्यांनी बी हाडून हांगा घडयला. हो एक तर काडपाक शकतात. कित्याक हॉस्पिटलांत धरलंय की कोणाक कितें जावन जर हात कट करून जाल्यार इतली हड्डीक म्हणा हे हॉस्पिटल करपाना हें आतां क्लियर जाल्ले कडेन आसा. आतां एकच उपाय आसा की हो हात कोणाचो तो. हो हात जो पळयलो जाल्यार हो हात जो बॅगर्स आसा ते खंय तरी मरपाक शकता आनी तेजोच जो हात हो सुणी घेवन आज येले कडेन आसा. आतां एक फातोड्डा पुलिसां एक चॅलेंज आसा की ह्या फातोड्डा पुलिसांनी हो सोदून काडपाक जाय की हो हात मेळ्ळा हो कोणा म्हणटा तो. बॅगर्सा आसूं या आनी कोणाले आसूं हे पळोवचें पडटलें. त्याच बरोबर दुसरे वटेन आमी पुलीस स्टेशनार विचारलें की खंयचो मनीस मिसींग आसा कितें आसा. होय रिपोर्ट सद्या पुलीस स्टेशनाचेर ना. म्हणटकीर हेजेर सकयल चवकशी करून फातोड्डा PI जो आसा हो बरें काम करता आनी तेजे जे स्टाफ आसा हेय काम करता. आतां पळोवचें पडटलें की वो हाथ को सोदून काटता थे. सुबह मैं जाने के टाइम में वो देखा था हाथ आदमी का हाथ है उधर सराउंडिंग में कुत्ता था. मैं देखा था अंकुल के पास जाके मैं पूछा था आदमी का हाथ है देख. कौन लेके आ रहा था? कुत्ता है वो सराउंडिंग में कुत्ता है किसको लेकर पता नहीं. कितना बजे देखा? 8 o'clock. रमेश नाईक राउत, Subhashish Govekar and Manisha Jadhav for Goa 365. History shooter Sumir Sakpal Sharma, a native of Punjab, has been arrested by Old Goa police following a dramatic chase. The 40-year-old has previously been arrested in several house break-ins and robberies across the state. Meanwhile, the police also informed that the person accused of assaulting a girl in Mapsa has been arrested last night and remanded to 3 days police custody. कल एक्चुअली नॉर्थ गोवा पुलिस के टीम ने एक अच्छा काम किया. एक इंटरस्टेट क्रिमिनल जो बेसिकली स्पेशलाइज्ड इन बर्गलरी उसको हमने पकड़ा है. सुमेर सतपाल शर्मा बेसिकली पंजाब से है एंड ही रिसाइड्स इन बेंगलुरु एंड वो एक्चुअली काफ़ी स्टेट्स में ट्रैवल करके बर्गलरी करता रहता है. ही स्पेशलाइज्ड इन हाउस ब्रेकिंग एंड स्टीलिंग आइटम्स फ्रॉम द हाउसेस. तो उसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है 2 केसेस ओल्ड गोवा में परवरिम के केसेस में है. इवन कर्नाटका में बेंगलुरु में बनारकटा में केसेस है. तो इन्होंने ये जो सोमेर है ही केम टू गोवा लास्ट कपल ऑफ कुछ दिन पहले एंड ही वाज एक्चुअली रैकिंग द एरिया. अपने टारगेट हाउसेस को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि बर्गलरी करने के लिए. कम से कम इंट्रोगेशन में उसने ये बताया कम से कम 10-11 हाउसेस उसने आइडेंटिफाई किया था.
बर्गलरी करने के लिए, लेकिन हमारा ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन के स्टाफ विथ इनपुट्स फ्रॉम मापसा एंड अदर पुलिस स्टेशंस दे वर ऑन ट्रैक, हम इनको ट्रैक में कर रहे थे एंड वी कॉट हिम व्हाइल ही वाज एक्चुअली रैकिंग दिस एरिया एंड उसके हाथ से जो हाउस ब्रेकिंग के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं उसको रिकवर किया। फिर हमने इंट्रोगेशन में अभी पता चला 2023 का मापसा का एक केस भी हाउस ब्रेकिंग का केस है, वो भी इसने किया है एंड वी आर इंट्रोगेटिंग दैट पर्सन। बेसिकली आई वांटेड टू से बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द पुलिस वी आर एबल टू प्रिवेंट मिनिमम 10 theft or burglaries in area. This is one of the instances of proactive and preventive policing. SP Nitin Walson further informed that police have hired special armor teams at dark spots in Goa as well as highway patrolling and two-wheeler patrolling to curb increasing number of thefts. SP Walson also provided details on the arrest of a man for molesting and assaulting a girl. The accused has been remanded to 3 days police custody. Diksha Gaokar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. With the lifting of the fishing ban due at the end of the month, boat owners are all set to venture out to sea. However, boats operating from Kodbona jetty are wary of losing catch to Karnataka as the government is yet to find a solution for the formation of sandbars at the mouth of the river. Boat owners here are now completely left at the mercy of the tide. Here's Ramesh Naik Raut with the full story. आज आमी आसात हे कुडबाना जेटीचेर आसात आनी तुमी जाणा आसतले की फाल्यां रातचे ज्यो ह्यो बोटी आसा फिशींग बोटी आसात ह्यो फाल्यां रातच्यो फिशिंगाक वचपाच्यो। ह्या नुस्तेकारांक एक प्रॉब्लेम आसा बोटी भितर घालपाक, जे माउथ ऑफ द रिवर जे आसा ह्या माउथ ऑफ द रिवराची अजुनूय बांदून घेतले ना, हेजे खातीर ह्या बोटीवाल्यांक वचपाक त्रास जातले आनीक नुस्त्या मेळपाक त्रास जातले। आनी हेजो फायदो जो आसा हे कर्नाटकाचे बोटी ज्यो आसात ह्यो घेवपाक शकतात, कित्याक वचपाक मेळना जाल्यार जे पयलीं जे सुंगट मेळटा या बरें नुस्तें मेळटा, चड सुंगटां मेळटात, हे लोक घेवन वतले। म्हणूनच जे बोटवाले आसात हे मागतात की माउथ ऑफ द रिवर जे आसा हे बांदून घेवचे आनी आमचो जो प्रश्न आसा हो सॉल्व करची म्हणून। आज जो वेळेचे MLA आसा हेणे काल असेंब्ली सांगले कडेन आसा की तेजे खातीर आमकां त्रास जाता म्हणून माउथ ऑफ द रिवराक, आनी एका आन्सर दिले कडेन आसा की हेजेर खंय तरी ज्यो मिस्टेक काडले कडेन आसात ह्यो मिस्टेक आमी सारकी करून खंय तरी हेजी वाट जी आसा ही सारकी करून दितले बांदपाची जे माउथ ऑफ द रिवराची। आनीक अशें MLA जो आसा क्रूज सिल्वा हेणे सांगले कडेन आसा की आपल्या अशें एश्युरन्स दिले कडेन आसा म्हणून। आतां पळोवया कितली बोट्यो फाल्यां रातच्यो फिशिंगा वयतली त्यो फाल्यां कळटले। पण सध्या फाल्यां तेंचे ट्रॉलर्स वचपाचे बॅन आहा तो काबार जातलो 1 तारखेर, तांकां वचपाक मेळटा। पूण एवरी इयर तेंगे प्रॉब्लम जाता भायर ते नुस्त्या हांडी कडेन वचपाक माउथ ऑफ द रिवर थिंगा तांकां वचपाक मेळना। आतां लेबर येयले तेंचे एक ट्रॉलर एटलिस्ट 40-50 जाण आसता, जरी तो ते एक वीक पासून थिंगा डिले जाले भायर वचपाक तांकां सगळें पेमेंट आहा आनी बोटकार लॉसान पडले। ताका लागून कितले वर्स जाली डिमांड घायलो तेणी ट्रेनिंग वॉल आहा ते करा म्हणून। आतां काल मिनिस्टरांनी उलयला तो प्रोसेस कितें क्लियरन्स एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणून थोडे कितें रिमार्क मारल्यात ते फुलफील करून तो रिपोर्ट करून आनी म्हाका आन्सर दितले भाशेन GSIDCक तेमी रिवायज एस्टिमेटरी करपाक दिला आनी एक पार्ट रिपोर्ट एनवायरमेंट क्लियरन्स जालें रोखडेंच ते मावताचे ट्रेनिंग वॉल घेत म्हणून सांगलें। पूण जाय तो गेले ते पार्टी तशें सांगलेलें, पूण म्हाका दिसता मातसो हे पार्टी मातशें सिरियस आहा, मिन्स कित्याक सोगट्यांनी डिमांड घायलो आहा। आमचो बाणावले MLAनी घायला, आमचो कुंकोळ्ळी MLA विरिनीन घायला। सो फाल्यां बोटी वचपाच्यो कितें मेसेज दिवपाक सोदता तुमी? बोट वचपा म्हणजे थिंगा कंडिशन जातले ते वचपा मेळटा काय ना। आतां कितें स्टार्टिंगाचो बोटकारांक वचपा मेळ्ळें जाल्यार तेंचे कितें रिकवरी जाता नुस्त्या सुंगटां बी मेळून, ना जाल्यार कितें दुसरे भायल्यो बोटी येता आनी थिंगाचे सगळे घेवन वयता, सो मागीर तेंकां वचोन कांयच फायदो ना। म्हणून हे माउथ ऑफ द रिवराचें काम एकदम इम्पॉर्टंट तेंकां जावपाचें। 40 वर्सां आमगेले जे बोटकार आहले ते झगडत आसा माउथ ऑफ द रिवराक सदां सँडबार जातली। हो काल दिसा असेंब्ली आमच्या आमदारान घेयला, पूण अजून कांयच ना। एकलो सांगता की ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स नो प्रपोजल म्हणटा एक एलिक्वियाचेर, आनी दुसरे एलिक्वियाचेर अंडर एनवायरमेंट हे बोर्डा अंडर प्रोसेस म्हणली।
पूण हे बोटकाराक आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी धंद्याक येयले जाले जावन ते पर्यंत तेज्यान पयलीं आमचे बोटकार मागत आसा एवरी इयर हे शेणबार जाता आनी आमकां वचपाक त्रास जाता आनी हांगा कितें जाता भायल्यो बोटी येवन आमचे गॅस घेवन वयता गोंयचे आनी आमचे बोटकारे उपाशी पडटात. तशेंच जालां पूण हांव सरकारान आमकां हेल्प करूंक जाय जाता ते बेगीन हे चालू करचें माउथ ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वॉल जे आहा ते आज आमचे कुडपण बोटकारांक गरजेचे आनी काल आमदारान सांगला जे 50% कॅच जाता येता गोंयांत ते इट इज फ्रॉम कुडपण जेटी पूण कुडपण जेटींतले रेव्हेन्यू जनरेट करून बी माउथ ऑफ द रिवर जायना अजून जायना. Ramesh Naik, Raut Subhashish Govekar and Manisha Jadhav for Goa 365. At least 14 people were killed in rain-related accidents in Telangana after heavy rains lashed the northern part of the state over the last 2 days. With many areas still inundated, rescue and relief work is still underway. 8 of the 14 deaths were reported from Mulugu district, where a group of people were washed away in a flash of floods in Jampanna Vagu, a major stream at Kondai village, stating that the Mulugu district received unprecedented rainfall, the highest ever of 650 mm in a single day on Thursday. National Disaster Response Force, local police and army personnel have taken up rescue and relief operations at the village. Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has been reviewing the situation in the state since the Thursday morning and has alerted ministers, public representatives and officials about relief measures and to prevent loss of life, said a CMO release. According to Chief Secretary Santi Kumari, 10,696 people from 108 villages were shifted to safer locations in the state. According to preliminary estimates by the Agriculture Department, crops in over 5,50,000 acres suffered damage. Standing crops including paddy, cotton, red gram and other crops were submerged, causing loss to farmers, Agriculture Department officials said. A bulletin issued by the India Meteorological Department said light to moderate rains and thunder showers are expected at many places in the state and heavy rain is likely in isolated places over northern Telangana in the next 48 hours. Subhashish Govekar and Shivani Sangilkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. On the occasion of the 3rd anniversary of the National Education Policy, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Akhil Bharatiya Shiksha Sangam on Saturday. Chief Minister Pramod Sawant also took part in the virtual inauguration. Prime Minister Narendra Modi on Saturday inaugurated the Akhil Bharatiya Shiksha Sangam to commemorate the 3-year anniversary of the National Education Policy. The NEP 2020 introduces several changes such as curricular restructuring of 5+3+3+4 alongside other changes. Chief Minister Dr. Pramod Sawant attended the virtual inauguration and addressed people present at the virtual inauguration at Ravindra Bhavan in Sakri. देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित हैं। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। हाल ही में संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पेश करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में
सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने का काम भी हो रहा है। आज हमारे आईआईटी के दो कैंपस जंजीबार और अबू धाबी में खुल रहे हैं। कई दूसरे देश भी अपने यहां हमसे आईआईटी कैंपस खोलने का आग्रह कर रहे हैं। दुनिया में से मांग बढ़ रही है। हमारे एजुकेशन इकोसिस्टम में आ रहे ये सकारात्मक बदलावों के कारण कई ग्लोबल यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोलना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोलने वाली है। नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या बाबतीत देशात पुराय सगळ्या सेक्टरात गोंय 1 नंबराचेर पावला आणि त्याची पुराय क्रेडिट ही तुमकां सगळ्यांक वता। आज हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर आणि आमचे HRD मिनिस्टर मीन्स एज्युकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधानजी हाजे 3rd एनिवर्सरी ऑफ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आणि अखिल भारतीय शिक्षा संगम हाचे अनावरण करता देशभर एक नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या बद्दलचे खूप बरे वातावरण क्रिएट जाल्ले आसा आणि पुराय देशभरांतल्यान नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी कशा पद्धतीत फुडें वता, कशा पद्धतीत वेगवेगळ्या राज्यांनी काम सुरू आसा। Manish Parab and Manisha Jadhav for Goa 365. Now for the weather. Incessant rainfall has battered Goa for the last week, but monsoon is all set to cool off in the coming days. There has been no warning issued for the next 3 days. The IMD has also downgraded the yellow alert, which had previously issued for Saturday. Here's more. The state is likely to get less rain over the weekend after IMD downgraded its weather warnings for the state. However, light to moderate rainfall will continue to mark its presence. The weekend is expected to witness 1 or 2 spells of rain but will remain sunny for the most part. The temperatures will likely see a slight rise, with IMD forecasting a high of 31 degrees Celsius and a low of 24 degrees Celsius for the next 24 to 48 hours. Weak monsoon to prevail for the next 3 days. IMD downgrades all warnings for the weekend. 1 or 2 spells of rain likely on Sunday. Moderate rainfall to continue. Maximum and minimum temperature on Sunday 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and update, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.